right? So I will start with basic revision, ठीक है, right? I guess हम लोगों ने इसका रिकॉल टेस्ट कर लिया था, ये हो गया था ना हमारा, रिकॉल टेस्ट हो गया था। आई गेस अभी इसका सबका आंसर याद होगा, सबको याद है, सबको समझ में आ गया ना, ये याद रहेगा ना? चलो, सो वी कंप्लीटेड, राइट, वी कंप्लीटेड बेसिक कॉन्सेप्ट्स। सो कॉन्सेप्ट टेस्ट हम लोगों ने नहीं किया था, सो वी विल स्टार्ट विद रिवीजन। कॉन्सेप्ट टेस्ट के साथ साथ रिवीजन भी हो जाएगा। ओके ओके, सो लेट मी आस्क यू दिस, a spring stretched by applying load, a spring stretched by applying load, है ना? Tell me, the strain is produced in the spring is, the strain produced in spring is, कैसा होगा strain? Everyone. Tell me. ये AB में से कोई बता दो. Just select anyone. Tell me, think about it. Longitudinal or shear? Very good, everyone. Very good. है ना? Awesome. Right, correct. So most of you are correct here, right? Both. Because when you talk about this spring, spring ऐसा होता है ना भाई? Spring ऐसा होता है, yes or no? है कि नहीं? Right? So if you see one cross section, अब ये cross section देखोगे, एक cross section देखो, suppose this is a cross section, तो इस पे force जो लग रहा है ना, वो क्या कर रहा है? वो उसको, tell me, that is actually the force, right, is actually in both the directions. उसको linearly भी खींच रहा है और area wise भी खींच रहा है, yes or no? हाँ या ना? Right? So as I told you, if this is a cross section area and if a force is like this, think about it. याद आया? अगर force ऐसे है तो उसको दो कंपोनेंट हो जाएगा, एक ऐसा और एक ऐसा, right? So this component, right, is F perpendicular and this component is F parallel. So this component will be responsible for longitudinal and this will be for shear, which is also a tangential, है कि नहीं, strain. Got it? Yes or no? Okay, right. So answer was B. Clear ये? सिंचना सबको समझ में आया? सिंचना, सुप्तिका, प्रशस्ति, अगर तुम लोगों ने एटलीस्ट 9.1 का वीडियो देखा होगा या पीपीटी भी देख लिया होगा तो समझ में आ गया होगा ये. Okay, this one. When a force is applied on a cubical body, okay, it gets slightly elongated to acquire the shape of a cuboid. Okay, this implies that the body is what? Tell me. Think about it. Everyone, think about it. सोचो, concept test है ये. Okay, Omkar. Okay, Krish. So the answer is D. The answer is D. Very good, Afaq. Very good. Why D? Why D? Think about it, ना. यहाँ पे कहीं लिखा है, it will regain its shape. Tell me, कहीं लिखा है, it will regain its shape? No, right? Yes or no? समझ में आया अब आंसर डी क्यों है? It might regain its shape. है कि नहीं? हो सकता है regain कर ले, हो सकता है नहीं करे, right? So that's why it is either elastic or plastic. Got it? Everyone got this? Yes or no? Okay, next. This one. Guys, अच्छे से पढ़ लो एक बार. Okay, I'm getting answers. Right. So heavy
यूनिफॉर्म रॉड इज हैंगिंग वर्टिकली. सोचो, इंग्लिश समझ में आना चाहिए, है कि नहीं? राइट? A heavy vertical uniform rod is hanging vertically from a fixed support like this. It is stretched by its own weight. Common sense, yes or no? Yes or no? Tell me. Right? It will be stretched by its own weight. Draw a straight line. ठीक है, चलो. Okay. Right. Consider the variation in stress due to its own weight. The diameter of the rod is, tell me, क्या होगा? Smallest at the top and gradually increases. Largest at the top and gradually decreases. Uniform everywhere, maximum at the middle. Tell me, think about it. किस पॉइंट पे? अच्छा वो छोड़ो, मैं तुमसे सिंपल सा पूछता हूँ. सपोज दिस इज पॉइंट ए एंड दिस इज पॉइंट बी, राइट? किस पॉइंट पे सबसे ज्यादा टेंशन होगा, ये बताओ. पॉइंट ए पे ज्यादा टेंशन होगा, पॉइंट बी पे ज्यादा टेंशन होगा? यू टेल मी. ए पे की बी पे? सोचो एक बार, किस पॉइंट पे सबसे ज्यादा एमजी लग रहा है? ऐसे सोचो ना, किस पॉइंट पे सबसे ज्यादा एमजी लग रहा है? विवेक सोचो, अगर ए है तो ए के लिए इसके पूरा नीचे का एमजी लग रहा है, यस और नो? दिस इज रिस्पॉन्सिबल फॉर एमजी, यस और नो? राइट? बट बी पे देखा जाए तो बी पे सिर्फ ये पोर्शन है ना, ये वाला पोर्शन है, राइट? तो ए पे ज्यादा एमजी लगेगा, यस और नो? ए पे नीचे की तरफ फोर्स ज्यादा लगेगा. गॉट इट? तो टेंशन भी किस पे ज्यादा होगा? ए पे टेंशन ज्यादा होगा, यस और नो? टेल मी, एवरीवन गॉट दिस? राइट? अफाक गॉट दिस? अफाक, राइट? है ना? यस और नो? एंड वी नो दैट व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ स्ट्रेस गाइस? फॉर्मूला ऑफ स्ट्रेस क्या होता है? फोर्स पर यूनिट एरिया. यस और नो? यस, गॉट इट? अब बताओ, अगर ए पे फोर्स ज्यादा लगेगा एज कंपेयर टू बी, तो स्ट्रेस कहां पे ज्यादा होगा? ए पे ज्यादा होगा, बी पे ज्यादा होगा? राइट? आंसर क्या होना चाहिए? समझ में आ गया? यस और नो? क्लियर? everyone is clear with this concept? Yes or no? बेसिक है ना, बेसिक. फोर्स पर यूनिट एरिया, काम खत्म, है कि नहीं? राइट? एनी इश्यूज इन दैट? सबको समझ में आ रहा है? यस और नो? राइट? सो टेंशन एट द टॉप is due to complete rod, है ना? Yes or no? Right? Clear? प्रशस्ति, सुक्तिका, जॉन, जॉन समझ में आया? जॉन, मौर्य, मोहित, मोहित तो है ही नहीं. मोहित कहाँ है? मोहित तो क्लास आता ही नहीं है. ओके, नेक्स्ट. सो हुक्स लॉ एंड स्ट्रेस ट्रेन का हम लोगों ने देख लिया था. सो टेल मी दिस वन, बेसिक. A wire can withstand a load of 20 kg, right? When it has a length of 1 meter. If the wire is cut into half, okay, the maximum amount of load that each part can individually withstand is logical, totally logical. Tell me. Okay, Preeti? Snigdho, common sense. Snigdho, common sense, which is not so common, right? बचपन में हम लोगों ने, I don't know how many of you how many of you heard this, silly question, that if you can see 10 kilometers, sorry, 1 kilometer from one eye, how far you can see from two eyes? कॉमन सेंस वाला सवाल. आई डोंट नो तुम लोगों ने सुना है कि नहीं सुना. हम लोग बचपन में होता है ना कॉमन सेंस सवाल. अगर एक आंख से 1 किलोमीटर दिखता है तो दो आंख से कितना दिखेगा? 1 किलोमीटर ओनली, राइट? तो वैसा सवाल है ना यार, वैसा ही सवाल है ना ये. यस और नो? राइट? स्ट्रेस का फॉर्मूला क्या होता है? व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ स्ट्रेस? व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ स्ट्रेस? हाँ, ये एग्जैक्टली क्रिश, वैसा ही सवाल है. स्ट्रेस इज व्हाट? फोर्स पर यूनिट एरिया ना. ये लेंथ पे डिपेंड कर रहा है क्या? टेल मी. यस और नो? नो, राइट? एंड वी नो दैट, सर,
we know that stress is equal to, right, y, which is what? Young's modulus, yes or no? Young's modulus into delta L by L, yes or no? This is a ratio, and this ratio is called as strain, right? So this ratio will be same now, yes or no? Hi or no? Right? Makes sense? Yes or no? So what do you think? What should be the answer? Now tell me, what should be the answer? Dhruv, how come Dhruv? Think about it यार, think about it, right? तुम खुद सोचो ना यार, एक लंबा रस्सी को तुम प्रैक्टिकली सोचो, एक लंबे रस्सी को तुम तोड़ दोगे, राइट, हाफ ऑफ कर दोगे, तब भी तो वो सेम वेट ही सस्टेन करेगा ना, ऐसा वही ना होगा कि सेम वेट अलग हो जाएगा. ओके, चलो, गॉट दिस, यस और नो? राइट, आई होप ऑल ऑफ यू अंडरस्टूड दिस. फोर्स पॉइंट area doesn't matter whatever is done to your length, है कि नहीं? चलो, okay, next this one, जल्दी जल्दी. मैं बता रहा हूँ ना, जो ये बेसिक लग रहा है ना, यही है बस. अगर ये समझ में आ गया ना, राइट, तो इसी पे कॉन्सेप्ट बिल्ड होते जाएगा. दिस लाइक बेसिक्स. ओके, दिस इज बेसिक फ्रेमवर्क, इसके ऊपर कॉन्सेप्ट बिल्डअप होगा. Everyone, step by step, write down the information first. Prashasti, Suktika, write down the information. Anyone? Step by step. A wire is stretched by this. What is this? Tell me, what is this? Weight. है ना? Weight. Right? Weight is what? mg. And the extension is this. This extension, which is delta L, is 0.3. How many times did the Young modulus change if the radius of wire is doubled and length halved? Young modulus y. Tell me, ये क्या होता है? Think about it. What is this? मैंने बताया था ना. What is this? This is a constant. Yes or no? Right? Yes or no? And this depends on material. Yes or no? हाँ या ना? Stress is directly proportional to strain. Okay. So if length, radius is doubled and length is halved, stress and strain will adjust themselves. है कि नहीं? Stress by strain is equal to y. So stress and strain will adjust itself so that y will be same. It should be same. Yes or no? Tell me. Think about it. Got it? Yes or no? सबको समझ में आ रहा है ना? Yes. Yes. Correct. So it is a constant, no change. Any issues in that? है कि नहीं? सबको समझ में आ गया? Okay. Now, सबको थोड़ा बहुत बेसिक समझ में आया? हाँ या ना? सबको बेसिक समझ में आया? Yes or no? Okay. So I hope all of you remember these. This PPT I've already shared, है ना? तो हम लोगों ने बेसिक समझ लिया था, ये सब समझ लिया था हम लोगों ने. Okay. Okay. Now, if I ask you, how many formulas do you have till whatever we have studied? How many formula do we have? Tell me.
Tell me, how many formula? Don't you think, sir, we have only one formula? Yes or no? Only one formula. Stress is equal to a constant into strain. Yes or no? That is the only formula. Yes or no? Right? This is the only formula. Now, depending on what is given, this formula can be written in multiple ways. है कि नहीं? अगर longitudinal है तो ये longitudinal हो जाएगा, tangential हो जाएगा, volume है तो volume हो जाएगा. Yes or no? Right? है कि नहीं? So there's a variation. So this is like main formula. Then there's a variation. Yes or no? Right? Strain फिर 3 तरह का हो जाएगा, है ना? Got it? Yes or no? Strain 3 तरह का हो जाएगा. Young modulus के लिए strain क्या होगा? Right? For longitudinal stress, it is delta L by L. है ना? Bulk modulus, it is what? Delta V by V. Strain is equal to strain. And for this, it is what? Tell me. Delta X by L, which is also delta theta. Yes or no? है कि नहीं? But बहुत simple formulas हैं. Okay? Any issues? तो लिख लो. ये सब बस याद रखना. Okay, चलो. Now let us see कि सवाल कैसे बन सकते हैं. Okay. Now if I ask you what kind of problem can be formed, tell me step by step. खुद बस सोचो एक बार. क्या लगता है कैसे प्रॉब्लम्स बन सकते हैं? सोचो एक बार एवरीवन. कैसे सवाल बन सकते हैं? Any idea? Any idea? Tell me. फॉर्मूला पुटिंग, इसमें सारे फॉर्मूला पुटिंग गेटिंग रहेंगे. सारे के सारे प्रॉब्लम्स फॉर्मूला पुटिंग गेटिंग ही रहेंगे, है ना? बट फॉर्मूला पुटिंग एंड गेटिंग में कैसा? एक तो स्ट्रेट फॉरवर्ड सब कुछ दे दिया रहे. यस और नो? राइट. I'll just try to wait into this. Okay, so I guess see, yeah, this problem we have seen. Yes or no? ये दोनों सवाल हमने देखा था ना, right? Okay, so this was like basic formula putting getting, है ना? This was basic formula putting getting. Now if I ask you what are the type of problems that can be asked, think about it. So don't you think, sir, हमारे पास क्या है? डेल्टा एल है, हमारे पास क्या है? फोर्स है, हमारे पास क्या है? टेल मी. हमारे पास क्या है? एरिया है. Parameters, I'm talking about the parameters. Yes or no? So the parameters that I'm having is, tell me, force by area is equal to y into delta L by L. Think about it. Socho. Think like a teacher. Okay. So what all can be done? What all can be done? Tell me, what all can be done? You tell me, what all can be done? You have only these 4 parameters now, right? Yes or no? So is there any way to change these 4 parameters? Tell me. Everyone, I'm giving you time to think. Step by step. Tell me. Right? I will just write down. I have only problem solving wise, है ना? कि कैसे approach लेंगे. Sir, I have this basic. Stress is equal to Young modulus. I'm talking about longitudinal, by the way, right? Because the parameter will change, है ना? Right? Into strain. Or F by A is equal to Y delta L by L. Right? Now, if you change this, Y is equal to what? F delta L by, sorry, F into L, my bad.
F into L by A into delta L? Yes or no? So type 1 क्या होगा sir? Type 1 would be everything is given, right? Everything should be given. Put करो, तुमको कोई एक वैल्यू पूछ देगा, है ना? कोई एक वैल्यू पूछेगा, right? So that is like formula putting and getting. Okay, formula putting. ठीक है? Now, what is type 2? Tell me, what would be the type 2? Think about it. What would be the type 2? फोर्स नहीं दिया रहेगा. समझ में आया तुमको? फोर्स नहीं दिया रहेगा. Yes or no? Right? Force need to be found. F need to be, right? है कि नहीं? राइट? एफ कुछ भी हो सकता है ना. एफ एमजी के कारण हो सकता है, एफ ग्रेविटी के कारण हो सकता है, एफ स्प्रिंग के कारण हो सकता है, एफ इलेक्ट्रोस्टैटिक के कारण हो सकता है, एफ किसी के कारण हो सकता है. यस और नो? राइट? एफ कैन बी एनीथिंग. एफ कैन बी एनीथिंग. यस और नो? यस और नो? टेल मी. एफ कैन बी ड्यू टू एनी फोर्स. यस और नो? गॉट इट? ओके, सो दिस इज टाइप 2. तुमको फोर्स निकालना पड़ेगा भाई. वो फोर्स कैसा है? फोर्स में एमजी है, फोर्स क्या है, राइट? नाउ टाइप 3, delta L, change in length, right? Change in length. Now let me ask you one question. देखते कितने लोगों के पास है ना अंडरस्टैंडिंग इसका आया. Now let me ask you one question. Suppose if I tell you, okay, this is a rod. I hope all of you understood the meaning of change in length. Yes or no? Yes or no? सबको समझ में आया कि change in length होता क्या है, right? Suppose this rod is actually made up of 3 different materials. Suppose this is made up of 3 different materials. ठीक है, right? उसको same area था join कर दिया. Suppose this is steel, this is copper, this is aluminium, right? और इसका लेंथ मान लो total L, this is also L by 3, this is L by 3, this is L by 3, right? Okay, इसका कोएफिशिएंट y1 है, कोएफिशिएंट वेलोसिटी इसका y2 है, इसका y3 है. Okay, now I have to find what is delta L. मान लो what is delta L if some mass is there, right? मान लो delta L निकालना है. Think about it. Total delta L. What do you have to do? Everyone, tell me what you have to do. क्या करना पड़ेगा? सोचो एक बार. सोचो, just सोचो. एक साथ मिला के निकालेंगे कि तीनों का अलग-अलग निकालेंगे फिर ऐड करेंगे? Yes or no? You tell me. How we will find total delta L? We will find for this, this and this, then we will add. Yes or no? Yes or no? Tell me. Okay? Pakka? Sure? Yes or no? So what is delta L1? Tell me, what is delta L1? Everyone, think about it. What is delta L1? सोचो एक बार. What is delta L1? सर मास तो दिया नहीं आपने, राइट? है ना? तो कैसे निकालेंगे? बट सेम ना, जो फोर्स रहेगा उस सबसे निकालेंगे. चलो, आई विल गिव एग्जैक्टली सेम प्रॉब्लम. ठीक है, एग्जैक्टली सेम प्रॉब्लम हम देते हैं एक बार. ठीक है, देखो, राइट? सबको सवाल दिख रहा है? एवरीवन इज एबल टू सी दिस प्रॉब्लम? यस और नो? यस और नो? राइट? नाउ यहाँ पे क्या, इट्स अ स्पेशल केस, राइट? तुमको दिया रहेगा यहाँ पे मास ऑफ रॉड
राइट, मास ऑफ रॉड तुमको नहीं लेना, इग्नोर कर दो, इट्स फाइन, मास ऑफ रॉड इग्नोर कर दो, ठीक है, बिकॉज इट इज नॉट गिवन ना, इट इज नॉट गिवन, राइट, सो यू डोंट हैव टू वरी अबाउट दैट, ठीक है, राइट, समझ में आया है कि नहीं? बिकॉज सी मास इज वैरिंग from one point to other point, so we will see, तो इंडिकेशन भी आएगा, because force will change, tension will change, तो हम लोग उसको देखेंगे एक बार, है ना, उसको भी देखेंगे, सेम कॉन्सेप्ट, हम लोग अभी इससे ज्यादा कुछ नहीं पढ़ेंगे, बस प्रॉब्लम सॉल्विंग देख रहे हैं ना। ये सवाल है, ये सवाल है जो अभी मैंने पूछा ना, यहाँ पे बताओ, as I told you, you have to find what, delta L, you have to find delta L, delta L, so as you said sir, right, नहीं ना, नहीं ना विवेक, इतना नहीं करेंगे ना, क्यों करेंगे, delta L will be what, so it is delta L1 plus delta L2 plus delta L3, yes or no, as you all said, yes or no, yes or no, right, because tension in this will be same now, because iska mass nahi diya hua hai, mass of the rod is not given, right, rod is considered to be massless, suppose, so tension will be due to this 10 kg mass only, है कि नहीं, समझ में आ रहा है, okay, y is given, y is given, area is given, length is given, right, इसका लेंथ 0.1 mm है, इसका लेंथ कितना है 0.12, 0.2 इसका 0.2 है, इसका 0.15 है, सो कैलकुलेट एरर, एरर क्यों डेल, डायरेक्ट फॉर्मूला पुटिंग गेटिंग इन, हाँ, एरर क्यों ही चाहिए, दैट इज नॉट एरर वाला फॉर्मूला ना, राइट, what is delta L1, step by step, what is delta L1, tell me, delta L का फॉर्मूला क्या होता है, सो बेसिकली यहाँ पे तुम देखोगे डेल्टा L1 इज, अब ये जो रॉड है, स्टेप बाय स्टेप ट्राई टू थिंक अबाउट इट, ये जो रॉड है वो थोड़ा सा एक्सटेंड होगा, सो डेल्टा L1 इज व्हाट, टेल मी, F, yes or no, right, F into L1 by A into Y1, yes or no, हाँ या ना, स्टेप बाय स्टेप, फॉर्मूला पुटिंग गेटिंग यार, फॉर्मूला पुटिंग गेटिंग, yes or no, raise your hand, yes or no, अब सब कुछ दिया हुआ है, सब कुछ दिया हुआ है, F is what, F is what, mg, F is what, फोर्स तो ये mg है ना, mg into del L1 given है, L1 is what, 0.1, right, yes or no, by A is also given 10 to the minus 7 into y1 is also given, right, this, right, try to solve this, everyone try to solve this, right guys, tell me, can you solve it now, बस पुट करके सॉल्व करना, देखो ये डेल्टा L1 निकल गया ना, and same way what is delta L2, what is delta L2, same F into L2
by A into Y2. Yes or no? Tell me yes or no. हाँ या ना? Right? So F तो mg का mg है, into L2 कितना है 0.2, BC का लेंथ कितना है 0.2, by A is same, right? Into what is this? Y2. Y2 is what? 4 into 10 power 10. है कि नहीं? समझ में आया सबको? Everyone is getting this, right? Same delta L3 निकल जाएगा. Same formula. As I told you, there's only one formula, right? But you should know how to use this, है ना? So यहाँ पे force is tension, which is mg. So this is what 0.15 by 10 to the minus 7 into 1 into 10 power 10, right? बस तीनों को ऐड करना solve करके. Now, if you see this, the F by A is constant. Yes or no? F by A is same. So I can just say, sir, delta L is what? Right? Delta L1 plus delta L2 plus delta L3. F by A तो common है ना? F by A तीनों में है. F by A common कर लूंगा मैं. क्या हो गया? L1 by Y1 plus L2 by Y2 plus L3 by Y3. Yes or no? Tell me. हाँ या ना? हाँ या ना? Everyone is getting this concept? Raise your hand. Yes or no? Yes or no? Think about it. कुछ दिख रहा है इसमें? कुछ दिख रहा है? Yes or no? कुछ समझ में आ रहा है? ये स्टामा के लिए लिखो, मैं तुमसे पूछूंगा, मैं इसको रिलेट करूंगा एक और बार, मैं इसको फिर से पूछूंगा, बट ये सबको समझ में आया? आया ना? ओके, राइट, वेरी गुड. चलो, एनी इश्यूज इन दिस? एनी इशू इन दिस प्रॉब्लम? सबको समझ में आ रहा है? ओके, राइट. सो गाइस, यू हैव टू कैलकुलेट द आंसर मतलब अभी नहीं, बट कैलकुलेट कर लेना व्हाट इज द आंसर. सो ये सवाल सबको समझ में आया? इस टाइप का सवाल समझ में आ गया? हाँ या ना? राइट. ओके, ओके, राइट. नाउ नेक्स्ट. तो ये तो सर, अगर ये तो था कि सर मास रॉड का क्या है, नहीं है, तो हमने मासलेस मानकर सॉल्व कर लिया. नाउ योर नेक्स्ट प्रॉब्लम, सर व्हाट इफ मास इज देयर? यस और नो? राइट? व्हाट इफ मास इज देयर? थिंक अबाउट इट. यस और नो? सर आप बताओ, अगर इसका मास रहेगा, थिंक अबाउट इट. रॉड is having mass m. ओके, अब ध्यान दो, यहाँ पे सबको ध्यान दो. जिनको नहीं भी आता है ना, पीछे का कोई भी चैप्टर नहीं आता है, कोई दिक्कत नहीं है. बेसिक इंटीग्रेशन तो पता है ना? एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होता है, ये तो पता है ना? टेल मी. रेणुका, सुब्दिका, प्रीति, पता है कि नहीं पता है? राइट? पता है सबको? यस, ओके. चलो, नाउ if I ask you, that sir, length is L, mass is m, okay, and coefficient of elasticity is y, okay. Think about it, right? Okay, what is delta L? What is the formula of delta L? Tell me. Area is A, area of cross section, okay, area of cross section is A, okay. So you tell me, what is delta L? What should be the formula of delta L? सोचो डायरेक्टली, बताओ. नाजनीन, टेल मी नाजनीन.
टेल मी क्या होना चाहिए, सोचो एक बार। पहले वाला, सो सर फोर्स, think about it, force into length by area into y, yes or no, यही होना चाहिए ना सर। फॉर्मूला में चेंज थोड़ी ना आएगा, फॉर्मूला तो यही होगा। yes or no, फॉर्मूला तो यही होना चाहिए। सबको समझ में आया ना, सबको समझ में आ रहा है, फॉर्मूला तो यही होना चाहिए, राइट कौशिक? समझ में आया कौशिक? जॉन? ओके, बट नाउ इफ वी टॉक अबाउट दिस फोर्स, अब मैंने बोला टाइप टू, टाइप टू, टाइप टू मैंने क्या बोला, that this force will change. This force is issue here. Now, what is this force? Will this force be mg? Tell me, this force will be mg? ये कॉन्सेप्ट है यहाँ पे। नो, व्हाई सर? थिंक अबाउट इट ना, जो m है वो तो टोटल रॉड का है ना, बट if this rod is having mass, as I told you, यहाँ पे टेंशन, यहाँ पे टेंशन और यहाँ पे टेंशन क्या सेम रहेगा? अब याद आया, समझ में आया कॉन्सेप्ट, यस और नो? समझ में आ रहा है कि नहीं? फॉर्मूला तो यही लगेगा, फॉर्मूला इज दिस ओनली, बट सर mg इज नॉट कांस्टेंट थ्रू आउट ना, बिकॉज यहाँ के लिए इतना मास है, यहाँ के लिए ये टोटल मास हो गया, यहाँ के लिए टोटल मास हो गया रॉड का, यस और नो? सो टेंशन इज नॉट कांस्टेंट, अब समझ में आया? टेंशन इज नॉट कांस्टेंट, यस और नो? हाउ मेनी ऑफ यू गेटिंग दिस? रेज योर हैंड, हाउ मेनी ऑफ यू गेटिंग दिस? तो ये लिखना गलत है, ये लिखना गलत है, यस और नो? राइट? So formula is what? Tension into L by A into Y, right? है कि नहीं? तो मुझे पहले टेंशन निकालना पड़ेगा ना, because tension is not constant, right? So tension, what is net tension? Net tension क्या होगा? Yes or no? I have to calculate this, right? Don't you think? Yes or no, everyone? Step by step. Think about it. Yes or no? Yes or no? हाँ सर, वो इंडिविजुअल टेंशन ईच पॉइंट में इंटीग्रेट कर देंगे पूरे रॉड। Okay. Yes, we will take small length dx. Hi Anna. Okay. Now let us see what we have to do. Everyone, step by step. Everyone, ध्यान दो यहाँ पे क्या करना है. As I said, sir, first of all, for each point, right, tension will be different. क्या हुआ? Okay. Tension will be different, है ना? So we will take elemental point, elemental cross section, actually this. Okay, ये छोटे से एलिमेंट की बात कर रहा हूं मैं, तो इसका मान लो मैं बोल रहा हूं ये है मेरा dx, सिर्फ इसका बात कर रहा हूं, ये पोर्शन का. ओके, सो इसका मास कितना होगा? व्हाट इज मास ऑफ दिस dx? टेल मी, याद है? dm होगा, हम लोग ऐसा कर चुके हैं हम लोगों ने, राइट? और dm का वैल्यू क्या होता है? dm इज व्हाट? वेरी गुड, लिख दो, इट इज टोटल मास बाय टोटल लेंथ इनटू dx. यस और नो? हाउ मेनी ऑफ यू नो दिस? हम लोगों ने ये कर रखा है, हाँ या ना? एवरीवन रिमेंबर दिस? रेज योर हैंड. राइट? मास पर यूनिट लेंथ इनटू छोटा मास. ओके, ऑसम. नाउ स्टेप बाय स्टेप हम लोग पहले सोचते हैं एक बार, राइट? अब ये राइट फॉर्मूला यूज करने से बेटर है हम लोग यूज करते हैं स्ट्रेस. स्ट्रेस क्या होगा? स्ट्रेस इज व्हाट? फोर्स पर यूनिट एरिया. और स्ट्रेन क्या होता है? टेल मी, चेंज इन लेंथ बाय एक्चुअल लेंथ. यस और नो? चेंज इन लेंथ बाय एक्चुअल लेंथ. बट मान लो हम एक्चुअल लेंथ को ही ले रहे हैं dx, एक्चुअल लेंथ इज ले रहे हैं dx. Yes or no? So I want to find the change in this dx. Yes or no? So I will just write like this: dy by dx.
dy, what is dy? Dy is change in dx. Got it? Yes or no? dy is change in dx. Okay, yes or no? Raise your hand. Yes or no? Any issues on this? Any issues on this? मुझे क्या चाहिए? मुझे एक्चुअली dy चाहिए ना, मुझे तो एक्चुअली यही चाहिए, मुझे एक्चुअली यही चाहिए. Yes or no? So if I just put the formula, और ये force कितना हो गया? What is this force? This force is dm. मैं इसकी बात कर ना, सिर्फ इसके लिए कर रहा हूँ, है कि नहीं? Think about it, right? सिर्फ इसके लिए dm into g by area. हाँ या ना? हाँ या ना? बताओ, yes or no? Or is this wrong? Is this wrong or is this correct? Tell me, is this wrong or is this correct? अंकित, अभिलाष, सोचो, इसमें कुछ गड़बड़ है? Wrong. Very good, Sampada. Very good. Only you said it is wrong. Correct. What is the mistake here? What is the mistake here? मैंने अभी समझाया तुम लोगों को, अभी समझाया तुम लोगों को, that when you talk about tension at this point, correct, very good. When you talk about tension at this point, ये total mass का tension होगा ना? Yes or no? Yes or no? हाँ या ना? Right? Yes or no? तो ये total length अगर x है, this total length is x, right? So tension will be because of this total mass. Yes or no? हाँ या ना? Got it? तो dm में ये लेना, हमको पूरा ये लेना है. So this is what? This is actually lambda into x. ये total mass lambda into x by area into g. Got it? हाँ या ना? Raise your hand. अब समझ में आया कॉन्सेप्ट? दो कॉन्सेप्ट समझ में आया सबको? प्रीति, प्रबलिका, सुप्तिका, रेणुका, सिंचना, प्रज्ञा, हर्षन, जॉन, विवेक, प्रियांशु, रेशमा, एवरीवन इज गेटिंग दिस? है कि नहीं? अब देखो, अब मुझे क्या करना है? अब मुझे फॉर्मूला पुट कर देना है. मुझे दोनों निकल गया ना, मुझे फॉर्मूला पुट करना है कि नहीं करना है? बस पुट करना है इसमें. तो लेट अस पुट दिस इन दिस फॉर्मूला. ओके सर, वी नो दैट स्ट्रेस which is what? Lambda into x into g by area is equal to y into strain, which is dy by dx. Any issues in that? बस same formula ना, है कि नहीं? Okay, now we want to find dy in terms of x. So cross multiply कर रहा हूं मैं अभी. क्या हो गया? dy is equal to what? Tell me. Lambda x g into dx by ay. Now here lambda g और ay सब कांस्टेंट है. टेल मी, lambda g और ay कांस्टेंट है, राइट? है ना? तो कैन आई से सर इंटीग्रेशन ऑफ dy इज इक्वल टू lambda g by ay. ओके गाइस, मैं इसको y के जगह पे l लिख देता हूं, बिकॉज तुम लोगों को ये y और ये y में कंफ्यूजन नहीं हो. ठीक है, आई जस्ट राइट इट एज l. ठीक है, राइट, ताकि तुम लोग कंफ्यूजन नहीं हो. dl l l. ओके, गॉट दिस? l, है ना? ओके, so this is what? dx integration. I missed one x, my bad. X dx. Yes or no? Yes or no? So what is this integration of dl? Integration of dl will be delta l. हाँ या ना? Change in length. Yes or no? And lambda g by ay is constant. What is integration of x? What is integration of x? x square by 2. Very good, very good, है ना? तो क्या हो गया? बताओ फॉर्मूला क्या हो गया? और ये जो है अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट. व्हाट इज अपर लिमिट? ये x कहां स्टार्ट होता है? 0 से लेकर l तक गया ना? 0 से l तक गया. यस और नो?
राइट, 0 से l तक गया। तो अगर जब पुट करेंगे तो क्या आएगा, लैम्डा जी एल स्क्वायर बाई 2ay, yes or no, हाँ या ना, हाँ या ना। And if you put the value of lambda, which is what, mg l square by 2 m by l, a y l l will get cancelled। तो देखो देखो तुमको क्या आ रहा है, m g l by 2ay। अब देखो, right, sorry, I could call it, yeah। Now if you see this, I'll just write down here, okay, I'll just write down here। So delta L is equal to what, mgl by 2ay, okay। और तुम लोगों ने स्टार्टिंग में क्या बोल दिया था, तुम लोगों ने स्टार्टिंग बोला था डेल्टा L इज इक्वल टू mgl by ay, yes or no। अब समझ में आया डिफरेंस, yes or no everyone, tell me। I hope all of you understood this, raise your hand। सर लैम्डा को एक्सपैंड करके एमजी आया है सर। नहीं, लैम्डा इज m by l ना, m by l, लैम्डा इज m by l ना, हाँ एम बाई एल इंटू जी एम जी बाई टू एल ऐसा आ गया था। राइट, yes or no। 2 कहां से आया, 2 is due to integration of x, हाँ हाँ सर। 2 is due to, है ना। Any issue in that, clear, is this clear, हाथ चलो, is this clear, सबको समझ में आना चाहिए, याद रहेगा, याद रहेगा, राइट। डेरिवेशन नाम कोई चीज नहीं, बस इंटीग्रेशन हो रहा है एक्स का, नहीं याद रहेगा तो बस ये याद रहेगा एटलीस्ट, ओके। इफ यू वांट टू नोट इट डाउन, राइट, है ना, यू कैन जस्ट नोट दिस डाउन जल्दी जल्दी, जस्ट फॉर्मूला नोट कर लो तब भी चलेगा। ओके, यस संपदा, ओके। सो लेट अस सी वन प्रॉब्लम हियर, है ना, सेम प्रॉब्लम, रिलेटेड प्रॉब्लम देख लेते एक बार, जैसे ये प्रॉब्लम है अभी, okay। So all of you see this problem, everyone, can you see this problem? Okay, now think about it, if you talk about this problem, है ना, समझो सेम कॉन्सेप्ट पे अगर ये सवाल सॉल्व किया गया है, राइट। नाउ लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस प्रॉब्लम, है ना, सिंपल सवाल है, फोर्स लगा गया, एल है, राइट। इफ मास, एरिया, क्रॉस सेक्शन एंड यंग मॉडल इज गिवन रिस्पेक्टिवली, ये स्मूथ है, right, find out the elongation, tell me what would be the elongation। tell me, very good Singh, very good, very good Singh। guys,
मैंने ये सवाल इसलिए पूछा बिकॉज दिस इज, डोंट यू थिंक दिस इज एग्जैक्टली सिमिलर टू द प्रीवियस कॉन्सेप्ट? यस और नो? यस और नो? नाउ टेल मी, अगर यहाँ पे फोर्स लग रहा है तो क्या इस पॉइंट पे, इस पॉइंट पे, इस पॉइंट पे सेम टेंशन होगा? यू टेल मी, सेम टेंशन होगा? क्या अलग अलग टेंशन होगा? सर टेंशन तो सेम होना चाहिए सर। यस और नो? टेंशन तो सेम होना चाहिए। नाउ टेंशन सेम होगा कि एक्सलेशन सेम होगा? यू टेल मी। करेक्ट, करेक्ट, एक्सलेशन सेम होना चाहिए। यस। नाउ हम लोगों ने जब एनएलएम में पढ़ा था दैट वाज इनएक्सटेंसिबल, यस और नो? उसमें एक्सटेंशन नहीं हो रहा था। ध्यान दो, डू नॉट मिक्स अप द कॉन्सेप्ट्स, यस और नो? जब हम लोगों ने एनएलएम पढ़ा था तो हम लोगों ने क्या पढ़ा था कि जो ऑब्जेक्ट है दैट इज इनस्ट्रेचेबल, यस और नो? हाँ या ना? राइट? याद आ रहा है सबको? यस और नो? कंस्ट्रेन मोशन था, इनस्ट्रेचेबल था, which means which means right? राइट? बट यहाँ पे तो इलोंगेशन हो रहा है ना? यहाँ पे इलोंगेशन हो रहा है कि नहीं हो रहा है? राइट? सो ऑब्वियसली यहाँ पे एक्सेलरेशन भी सेम नहीं रहेगा और टेंशन भी सेम नहीं रहेगा, बिकॉज ऑब्वियसली दोनों दोनों एक दूसरे पे डिपेंडेंट है। वी नो दैट एट एनी पॉइंट एक्सेलरेशन इज इक्वल टू व्हाट? फॉर एनी पॉइंट एक्सेलरेशन इज इक्वल टू व्हाट? टेंशन बाय मास, यस और नो? यस और नो? राइट? इस पॉइंट पे, इस पॉइंट पे, इस पॉइंट पे टेंशन अलग होगा ना? बिकॉज हम लोगों ने जब बात की थी इस टेंशन ऑफ इन द रोप इज सेम, वी हैड दिस वेरी क्लियर कॉन्सेप्ट दैट सर दिस रोप इज इनएक्सटेंसिबल, यस और नो? राइट? तो अब कॉन्सेप्ट समझ में आया? स्टामा कॉन्सेप्ट समझ में आया? हाँ या ना? राइट? तो एनएलएम वाला कॉन्सेप्ट हम लोग मिक्सअप नहीं करेंगे, मिक्सअप नहीं करेंगे। राइट? ना डोंट थिंक सर अब टेंशन जो है एग्जैक्टली सेम हो गया ना? हर पॉइंट पे मास अलग अलग है। राइट? एकदम एग्जैक्टली सेम होगा कि नहीं ये चीज? एग्जैक्टली सेम हुआ कि नहीं ये चीज? हाँ या ना? यस और नो? राइट? सो बताओ, तुम खुद बताओ, व्हाट शुड बी द फॉर्मूला? व्हाट शुड बी डेल्टा एन? एवरीवन, व्हाट शुड बी डेल्टा एन? लेट मी ask what should be delta n without solving? What should be delta n? Correct ध्रुव, वेरी गुड। राइट? यहाँ पे mg नहीं है ना ध्रुव? mg नहीं है ना? फोर्स कौन सा है? दिस इज नॉट mg, राइट ध्रुव? राइट जयिता? कॉमन सेंस लगा लो, mg नहीं है ना? राइट? फोर्स तो ये है ना? सो इट शुड बी व्हाट? f, mg की जगह f होना चाहिए। fl by 2ay, yes or no? Got it? Yes or no? Tell me, है ना? The only thing that is changes mg की जगह मेरा फोर्स दे दिया है। राइट? ओके। एंड if you want to calculate then also you can do it ना? ये x है, ये dx है। राइट? तो इस पॉइंट पे इसका मास निकल जाएगा ना स्टेप बाय स्टेप। सेम थिंग, एवरीथिंग वुड बी एग्जैक्टली सेम, यस और नो? यस और नो? सुक्तिका, अगर इसका अगर मासलेस है ना सुक्तिका, राइट? जैसे देखो यहाँ पे ये वाले सवाल में क्या किया गया था, देखो ये जो सवाल था यहाँ पे क्या था? यहाँ पे रॉड मासलेस था ना? रॉड, जब रॉड मासलेस है देन डायरेक्टली यूज करेंगे, है कि नहीं? बिकॉज टेंशन इज ड्यू टू दिस। राइट? गॉट इट? कॉन्सेप्ट समझने का ट्राई करो। ओके, समझ में आया कि नहीं? राइट? तो हम लोगों ने ये क्यों किया सर? बिकॉज
यहाँ पे massless नहीं है, so tension at every point is changing. That's why we have to use this formula. Here also, mass of this object is given. That's why at every point mass is changing. That's why delta L will be FL by 2AY directly. You can try to solve this step by step using same concept. Right? What concept? Sir, acceleration will be what? Acceleration will be total force by total mass. Yes or no? Right? Then at this point, okay, tension should be equal to what? This mass, right? है ना? इस पे क्या होगा? ये वाला mass, m dash, right? और ये इसको x मान लो, into acceleration, yes or no? है ना? Step by step. और m dash क्या हो जाएगा? So m dash is what? Tell me. M dash is total mass by total length. Yes or no? Right? Into x. यहाँ पे मैं x इसको मान रहा हूँ. x इसको मान लो. Yes or no? तो सेम चीज आ गया. Tell me. हाँ या ना? हाँ या ना? टेंशन क्या आ गया बताओ? What is tension? F by L, because mm कट गया ना, mm कट गया, into x. अब समझ में आया? Got it? और पहले क्या था टेंशन? जो ऊपर दिखे थे, ऊपर भी यही था ना, mgx. देखो यहाँ भी टेंशन ये था ना, राइट? mgx by L सेम चीज है ना, है कि नहीं? mg के पास फोर्स आ गया. Got it? So all of you understood this concept? Raise your hand. All of you understood this concept? है ना? तो ये टाइप 2 है, ये टाइप 2 ही है, जहां पर सिर्फ क्या चेंज हो रहा है? सर फोर्स जो है वो चेंज हो रहा है हर पॉइंट पे. ओके, राइट? एनी इश्यूज इन दिस? सबको लॉन्गिट्यूडनल समझ में आया? सबको लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस और स्ट्रेन समझ में आया? यस और नो? राइट? अब इससे ज्यादा टाइप नहीं पूछेगा. लॉन्गिट्यूडनल बस यही है ना? ना डेल्टा एल कैसे होता है तो हम लोगों ने देखा है. डेल्टा एल नेक्स्ट टाइम में पढ़ेंगे, नेक्स्ट टाइम हीट में. कभी कभी क्या होता है ना कि टेम्परेचर के कारण डेल्टा एल चेंज होता है, राइट? सो दैट वी विल स्टडी आफ्टर स्टडीइंग दैट चैप्टर. ओके, राइट? Okay, so we are done with longitudinal stress and longitudinal strain. Everything regarding this we have completed. Yes or no? Tell me. Yes or no? Right? So ये examples, ऐसे examples हो जाएंगे, ऐसे examples हो जाएंगे ना? ये सब examples एक बार try कर लेना. Solution के साथ दिया हुआ है, एक बार try कर लेना. Okay? Right? और last में कुछ problems दिए हुए हैं, ये एक बार try कर लेना. Okay. Then आते हैं हम लोग bulk modulus. Okay, everyone. So we are done with longitudinal stress, longitudinal strain, and Young modulus. Yes or no? Raise your hand. सबको समझ में आया कि नहीं आया? Okay. Now let us talk about bulk modulus. Now what is bulk modulus? Bulk modulus or volumetric strain, है ना? Volumetric strain. What was volumetric strain? Tell me. So it is change in volume by original volume. Yes or no? Yes or no? Right? Now if I ask you why this happens, think about it. Suppose you go down the river or down the sea. Do you feel anything? Tell me, do you feel anything? Like obviously तुम कभी गए नहीं होगे, but logically सोचो, do you feel any kind of pressure? Yes or no? Right? Yes, you will feel pressure. हाँ या ना? Right? You will feel pressure. Correct. Very good. Now obviously if you go, I don't know if you have heard this or you have watched some documentary or something like that. If you will go very down, then you will feel squeezed. Right? Body squeeze हो रहा है. Yes or no? Tell me. Right? है ना? So don't you think, sir, due to pressure, increased pressure, right, there will be change in volume? Yes or no? हाँ या ना? Common sense. सोचो था, right? सोचो. Just try to feel these concepts. Right? और better example. ये तो जो practical examples है. ठीक है, next. How many of you seen the water bubble coming out of boiling water?
or not just boiling water, right? If you have any carbonated drink, any carbonated drink, right? How many of you see water bubble coming out of it? Right, everyone? So don't you think it comes out like this? जैसे से ऊपर जाएगा वैसे वैसे क्या हो गया? बबल का साइज बड़ा होता जा रहा है. Yes or no? Yes or no? Everyone have observed this, right? Yes or no? Yes, no. Why do you think? Why this happens? What do you think? That there should be, so in this, the pressure from all the directions will be very high. Yes or no? Because of this pressure, there will be change in volume. Ab samajh mein aaya? Yes or no? Right? Yes or no? Got this? Right? Any issues in this? Any issues in this? No, right? So can I say that, sir, right? I will just take this concept only. Stress is equal to a constant into strain. फॉर्मूला यही है, फॉर्मूले में चेंज नहीं है ना? Sampada, I just said that due to change in pressure, there will be change in volume, right? So now in this case, the stress is basically what? Force per unit area, which is actually pressure, which is actually pressure. Yes or no? Right? Okay. And this is equal to what? K. K is elastic constant, जिसको मैंने अभी K बोला, right? But this is represented as B. But I'll just write as K only. ठीक है? Now strain. Now when you talk about strain, what is changing here? Tell me. What is changing? Length change हो रहा है क्या? No, volume is changing, right? So this is delta V by V. And this is called your volumetric strain. Yes or no? This is called your volumetric strain or volume strain. Everyone got this concept? Raise your hand. Everyone got this concept? Raise your hand. Hayana. Right? And force per unit area. Pressure is what? Perpendicular force per unit area. हम लोगों को पता है ये चीज. Any issues? है ना? Okay. So if I have to say, what is the definition of bulk modulus? It is the ratio of normal strain by volumetric, normal stress. My bad. Right? है ना? Okay, it is stress by strain, right? Okay, we'll just ignore this. ठीक है, right? It is stress by strain. वहाँ में mistake हो गया. ठीक है, that is not strain. Okay, right? Got it? It is stress by strain. Yes or no? Yes or no? Any issues? Any issues? Now, why there's a negative sign over here? Tell me, why there's a negative sign over here? लिखा हुआ है, but logically सोचो, जब प्रेशर बढ़ेगा तो वॉल्यूम क्या होगा? कम होगा ना? Yes or no? Right? And this constant, it should be positive. Yes or no? Right? And delta V is what? Negative. So negative और ये positive क्या हो जाएगा? Balance हो जाएगा ना? Right? No, delta V की बात हो रही है. Delta V is always final minus initial ना? है कि नहीं? Right? Delta V क्या होगा? है कि नहीं? कम हो रहा है ना? Volume कम हो रहा है, right? Yes or no? Okay. So all of you got this concept? Tell me. All of you got this concept? Yes or no? Raise your hand. यहाँ पे टाइपो मिस्टेक गाइस, यहाँ पे बहुत सारा प्रिंटिंग मिस्टेक है, तो तुम लोग ध्यान दो. दिस इज के एंड इज आल्सो कॉल्ड एज बी, बल्क मॉडुलस. ठीक है, यहाँ पे बहुत सारा प्रिंटिंग मिस्टेक है. दिस इज एग्जैक्टली सेम प्रॉब्लम, है ना? राइट? स्ट्रेस इज इक्वल टू बल्क मॉडुलस इनटू स्ट्रेन, राइट? बट यहाँ पे नेगेटिव होता है because this delta V is, tell me, change in volume which will be negative. And stress is what? Pressure is equal to minus B into delta V by V. So B is equal to what? Minus P into V by delta V.
Got it? Everyone got this? Yes or no? Tell me. Yes or no? तो ये नोट कर सकते हो, है ना, शॉर्ट नोट्स में लिख सकते हो. Everyone, are you getting this concept? Raise your hand. Anyone have any doubt on this? समझ में सबको आ रहा है? Yes or no? हाँ या ना? यहाँ तक समझ में आया? हाथ चालो. ओके, राइट. तो फॉर्मूला पुटिंग गेटिंग बन जाएगा इस पे फॉर्मूला पुटिंग गेटिंग बन जाएगा. यस और नो? टेल मी. अगर डायरेक्ट फॉर्मूला पुटिंग गेटिंग दिया हुआ है बन जाएगा. यस और नो? ओके, नाउ ये तो मैंने समझाने के लिए बताया, बट जनरली दैट P, obviously that is not P, that is delta P. Yes or no? Tell me. Change in pressure होगा ना वो, हाँ है ना? If you talk about actual formula, that should be a change delta P, change in pressure. Yes or no? Yes or no? Right? Because जैसे तुम चेंज हो रहा है, ओके जैन, राइट? जैसे तुमको सुना, ये जो फोर्स है, दिस एक्चुअली व्हाट, व्हेन यू आर मूविंग फ्रॉम वन, सपोज ये जो एग्जांपल था, है ना, if you're moving from this point to this point, right? Pressure is changing. Yes or no? There is change pressure. Yes or no? So stress is due to change in pressure. So ये जो छोटा वाला P है ना, right? It's actually change in pressure, right? Got this? Tell me, because tell me what is happening. Sir, area is also changing, right? है ना? So this is actually change in pressure. So bulk modulus is basically what? Tell me. Minus delta P, है ना, by delta V into V. Yes or no? Yes or no? Okay, right? Now अब यहाँ पे तुमको थोड़ा सा केमिस्ट्री भी घुसेगा, यहाँ पे थोड़ा सा केमिस्ट्री घुसेगा, है ना, थोड़ा सा केमिस्ट्री घुसेगा, राइट? डोंट वरी, बहुत सिंपल सा होता है, बहुत हाईफाई नहीं होगा, बट एटलीस्ट ये सबको समझ में आया. तो अगर यहाँ पे तुम बेसिक फॉर्मूला पुटिंग गेटिंग सवाल देखोगे तो कैसा आएगा? लेट अस ट्राई टू सी द प्रॉब्लम फर्स्ट, है ना, फिर आगे कुछ करते हैं. तो सबसे पहला प्रॉब्लम जो है, सिंपल प्रॉब्लम ये है, सर contracts by this. So delta V given. Delta V is what? Minus 0.01%. Right? Yes or no? So delta V by V कितना हो गया? Delta V by V is actually, tell me what? Tell me. 0.01 by 100% है ना भाई? Just 1 into 10 minus 4. Yes or no? And this is, tell me, negative. तो negative को हम रख लेंगे, right? Because वो टोटल पॉजिटिव होता है, तो बीटा कितना हो गया है, राइट? और यहाँ पे प्रेशर दे दिया है, दिस इज प्रेशर इज गिवन, राइट? सो बी निकालना है, निकल जाएगा. सो इट इज प्रेशर बाय डेल्टा वी बाय वी. सॉल्व, सिंपल. यस और नो? फॉर्मूला पुटिंग गेटिंग, यस और नो? इजी है कि नहीं फॉर्मूला पुटिंग गेटिंग सवाल? यस और नो? हाँ या ना? एनीवन हैव एनी डाउट इन दिस? Anyone have any doubt in this? Raise your hand. Yes? Okay, chalo. Awesome. Very good. Right. Now, let us solve one more problem. Okay. Just give me a minute. Okay. Okay. Right. Now think about it. Right? ये note कर ले तुम लोग. Now what is this? What is यहाँ पे ये गलत है. This is
actually यहाँ पे this is K, right, which is modulus of elasticity, right, and this modulus of elasticity is known as bulk modulus. तो हम उसको अभी यहाँ पे K है तो K ही लिख रहे हैं. Now think about it. K is what? What is K? K is, tell me, modulus of elasticity, right? Yes or no? Yes or no? Now what do you think? What by 1 by K का मतलब क्या होना चाहिए? सोच एक बार. 1 by K का मतलब क्या होना चाहिए? इलास्टिसिटी का उल्टा क्या होता है? नॉट प्लास्टिसिटी ऑब्वियसली, राइट? ठीक है. No, not rigidity. It's called a compressibility. Compressibility. समझ में आया? Right? So reciprocal of modulus of elasticity or this K is compressibility, है ना? Right? जितना, think about it, right? Think about it. if anything which can be expanded, right, है ना? Think about it. जितना expand कर सकते हैं, ठीक है, अगर किसी का modulus elasticity ज्यादा होगा तो उसका compressibility क्या होगा? कम होगा. So this is just a term. Generally नहीं पढ़ना होता है, but just a term. याद रखना. ठीक है, कभी क्वेश्चन आएगा कि व्हाट इज द compressibility, तो कैसे सॉल्व करेंगे? बस k निकाल के उल्टा कर देंगे. समझ में आया? Tell me. Right? And this is reciprocal of bulk modulus of elasticity. That's it. So reciprocal of bulk modulus of elasticity is called as compressibility. Okay, right? Any issues in that? Any issue in that? No? Okay, right. अब देखो, खत्म नहीं हुआ ये, bulk modulus खत्म नहीं हुआ है ना? So let us see one more concept. So I will just write here bulk modulus. Bulk modulus, right? B, है ना? So we know that B is equal to what? Minus delta P. Okay, or I'll just write P only. ठीक है, P लिखता हूँ मैं से. P into V by delta V. Yes or no? Yes or no? Right? और just basic formula जो था वही लिख रहा हूँ मैं. P is equal to minus B delta V by V. Okay, now what do you think? Right? What is the type of problem that will be asked? Type 1. Formula based. Yes or no? जो हम लोगों ने देखा, right? What is type 2? What is type 2? So क्या होता है ना, कभी कभी तुमको डेल्टा वी ना देकर, चेंज इन वॉल्यूम ना देकर, चेंज इन डेंसिटी दे देता है, डेल्टा डी दे देता है, डेल्टा डी बाई डी. समझ में आया? राइट? चेंज इन वॉल्यूम ना देगा, चेंज इन डेंसिटी दे देगा, राइट? So what do you think? What is the formula of, what is it? I hope all of you know that density is equal to what? Mass per unit volume. Yes or no? हाँ या ना? Right? So using the concept of error, delta d by d is equal to delta v by v. Obviously there will be negative sign, तो sign को ignore कर रहा हूँ मैं. Obviously there will be negative sign, तो sign को मैं ignore कर दूंगा generally. But I hope you understand this. Yes or no? Yes or no? Tell me. Yes or no? So can I write this as minus minus plus हो गया beta delta d by d? Raise your hand. Can I do that? So instead of change in volume, they will give you change in density. समझ में आया? Yes or no? Tell me. All of you got this? Right? Any issue in that? Any issue in that? Right? This is type 2. Okay. So जैसा volume दिया ना वैसे change in density दे देगा. The change in density is this. What is the pressure? What is the bulk modulus? Okay. Got it? Delta V is replaced by
change its density. Okay, right. So what I'm asking you to do is, कल भी मेरी class है ना? So what I'm asking you to do is, you just have to, okay, this 5 question है ना, this 5 and this 3, right? 8 questions, 8 questions, ठीक है, 8 questions, right? And ये बाकी बचा हुआ जो है वो एक बार पढ़ के आ जाना. Can you do that? Minimum. Yes, Yes, sir. yes, Snigdho. Right, my class, wait, I told you, no, right? My class will be online, बाकी नॉर्मल तुम्हारा ऑफलाइन रहेगा, ठीक है? राइट, जैसे आज हो ऐसे ही, ठीक है? ओके, ठीक है? क्लियर? एनी इश्यूज? टेल मी. ओके, चलो, बाय एवरीवन. I put up jacket, by the way. I was feeling cold. Okay, chalo guys.